Are you in the class? Yes, so I had like very bad internet connection, so I had to rejoin a couple of times. Okay, that's okay. Can you turn your video on? If that's okay. Yeah. If the connection is bad, you can disconnect and connect again. You can just tell me that you're disconnecting so that I will pause the class for some minutes and then we can continue again. Okay. Yeah, so I'm joining from my laptop because that gets better internet connection. Yeah. Okay. Do that. ये श्रुति अनन्या कुछ काम किया क्या? या नहीं किया इस बार भी? नहीं किया दोनों ने? श्रुति ने तो मुझे मैसेज किया था that I was not able to do it, but अब से मैं करूंगी. Let's see, let's hope that she does that. हमेशा काम करती हूँ इस बार ऑनेस्टली मैं नहीं कर पाई इसलिए नहीं किया आई ऑलवेज डू इट दिस वाज अ जेन्युइन I know that you do more work than I give it to you, so that is a good thing. But इस बार कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ तो. And अनन्या क्या रीजन है? काम क्यों नहीं किया? आई ट्राइड रिव्यू सेट बी ऑफ बुक आई डिड हाफ You did half of it. Pie Yes. sheet, right? Pie No, sheet or from your book? in the book Okay. So class में अपन शुरू में पहले doubts करेंगे and then we will start with functions. Okay? okay sir. Functions. Yes, everybody is in class now. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर कंटिन्यूइंग बिकॉज आज अनन्या और दिव्यानी की थर्ड क्लास हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद यू हैव टू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द क्लासेस. ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा कैसे करना है. आई विल सेंड यू अ मैसेज. श्रुति तू तो कंटिन्यू कर ही रही है, सो दैट इज जस्ट दैट यू ऑल्सो can send the first installment of the fees after today's class. ठीक है. Yes, okay. So आज पहले अपन sets and relation के doubts करेंगे complete and then we will start with functions. जितने भी हैं थोड़ा सा time I will set aside for doubts for today's class and then we will start with functions. Otherwise अपनी theory complete नहीं हो पाएगी जितना मैं कराना चाहता हूँ आज क्लास में. ठीक है. So कोई प्रॉब्लम्स मेजर है क्या? कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स किसी चीज में डाउट है जो अपन ने कवर किया है अभी तक जो मुझे वापस बताना है, ऐसा कुछ है? नो? ठीक है. अरे कुछ बोलो तो सही. ओके. हैव यू डन फ्रॉम योर बुक? हैव यू ट्राइड क्वेश्चंस? दिव्यानी? No, I just tried the pie sheet right now. पाई शीट. ओके, ठीक है. Yeah. पहले बुक कर I लेते tried हैं. the pie sheet. ठीक है, पहले बुक में से डाउट्स कर लेते हैं जो है एंड देन वी विल कम टू द पाई शीट. ठीक है. 5:30 तक अपन ये करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद फंक्शंस. तो बताओ सेट्स में यस अनन्या, श्रुति? डाउट्स हैं या नहीं है बिल्कुल भी? ठीक है श्रुति. ओके. अनन्या?
So I got disconnected. Beach, I didn't hear anything. Okay. Any doubts in the book? No, sir. No doubts. सारे questions हो गए? No, मतलब I've done half of the review set B. उसमें I have no doubts. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पाई शीट पे आ जाते हैं फिर। कहाँ रखती है मैंने? यस, ओके। पाई शीट में से कौन से डाउट्स हैं? जल्दी जल्दी पूछना है so that we can move forward. So, हाँ, so I had a doubt in the 6th, 7th, and 8th question because I didn't get, I couldn't understand what the notation was. where sixth question में कौन सा है? Which So, notation? जैसे कि 6th question का जो answers का part is like a to the power c. So A to I the didn't power- get that notation. A Like to I the didn't, power c I is don't know what that it notation means means. complement. Complement को a dash या फिर a to the power c भी लिखते हैं, so that means complement. Oh, okay. Okay. So that I'll be able to do them. Yeah. Any So more can you doubts? also explain the 11th question once? 11th question. 11th will be if A, B, and C are non-empty sets. This one, right? Yeah, so. If A, B, and C, if A, B, and C are non-empty sets, then A minus B union B minus A is equal to what from the options? So पहले इसका अपन Venn diagram बनाते हैं. A minus B union B minus A. Set A and set B. A minus B will be which part? Set A में से we will exclude the set B. जो भी common है वो exclude कर देंगे. So this will be A minus B. ठीक है? B minus A will be which part? It will be set B में से set A को exclude कर दिया अगर तो क्या बचेगा? This one. This will be B minus A. Empty set कैसे हुआ श्रुति? यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है. कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा. सो द शेडेड रीजन इज दिस गिवन एक्सप्रेशन. दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब ऑप्शंस में से देखना है, ऑप्शंस में से देखना है. ए यूनियन बी, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, माइनस बी. ए यूनियन बी माइनस बी, ऊपर बना रहा हूं. A यूनियन B माइनस B. अब A यूनियन B कौन सा हो गया? द कंप्लीट दिस पार्ट, दोनों सेट्स के अंदर वाला पार्ट इज A यूनियन B माइनस B. मतलब we will exclude B from that. That will be only this part. A यूनियन B में से B एक्सक्लूड कर दिया तो ये वाला पार्ट बचेगा. यस, B नहीं आएगा बिल्कुल भी. A यूनियन B तो पूरा कंप्लीट हो गया रीजन. उसमें से B जो है सेट वो हटा देंगे तो we will get the shaded region. So this is definitely not equal to this. So this is wrong. Second option is A minus A intersection B. A minus A intersection B देखो. A intersection B कौन सा हो गया? ये वाला region. ये वाला region. दोनों का common. A intersection B. अब पूरे A set में से we have to subtract this part. तो वापस से जो shaded region है वही आ जाएगा. A minus A intersection B. So again that is this shaded region, not equal to this. Third one is A union B minus A intersection B. इसका कैसा हो जाएगा? Venn diagram. This is set A, this is set B. A union B will be complete set, दोनों sets का combination. A intersection B will be the common part of both the sets. उसको exclude करेंगे from A union B. We will exclude A intersection B from A union B. तो कौन सा region बचेगा? This region. This region will be left. ये क्या है? ईसा correct? हाँ? कॉमेडी चल रही है क्या?
श्रुति क्या क्या करती रहती है तू एकदम मेंटेन क्लास डेकोरम सर तो ऊपर देखो LOL का मतलब क्या होता है? क्या सो आपको पता है ना जूम पे प्राइवेट चैट कर सकते हैं। हाँ तो सर कई बच्चे मेरे को प्राइवेट पे लिख रहे हैं ऐसे LOL जैसी तो चीज। इसलिए मुझे लग ही रहा था तुम लोग जब चैट कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग ऐसे सब कर सकते हो व्हेन यू डोंट यूज चैट तब तो ऐसा कोई भी नहीं करता है सर ऐसे लिख रही है व्हाट आर यू डूइंग LOL और ये सब सब पढ़ रहे हैं सर अनन्या। so don't reply that's the best answer That's why I said everyone पे maintain class decorum. So I won't ठीक है reply. हाँ तो अब नहीं करना है अनन्या मेक श्योर यू डोंट मैसेज श्रुति और दिव्यानी अब तुम लोग क्लास में अगर ऐसे हरकतें करोगे तो फिर बिल्कुल भी क्लास में कंटिन्यू नहीं करूंगा आई विल स्टॉप ठीक है ना तो ऐसे मत करो अदरवाइज क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है एंड आई विल स्टॉप क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा सो या ओके दैट्स इनफ ठीक है श्रुति समझ गया मैं ठीक है हाँ तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B कॉमन पार्ट है A यूनियन B में से कैंसिल हटाएंगे उसको एक्सक्लूड करेंगे तो ये वाला रीजन बचेगा विच इज इक्वल टू दिस वन सो दिस इज द करेक्ट आंसर तो C वाला हो जाएगा ठीक है दिव्यानी आगे Yes, I understood. Like I didn't use the Venn diagram. That's why I think I got a bit confused. नो हाँ तो वेन डायग्राम यूज करके ही करना है अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ठीक है वेन Yes. डायग्राम इट मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड सेट्स तो व्हाई आर यू नॉट यूजिंग इट वो तो करना ही है यूज जैसे अभी तुम लोग जब यू आर एबल टू कम्युनिकेट विथ मी आराम से माइक को अनम्यूट करके यू कैन टॉक तब भी तुम लोग चैट पे लिख रहे हो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे आके खोल के देखना पड़ता है कि क्या लिखा है तो ऐसी चीजें मत करो जो कन्वीनियंट है चीजें वो इस्तेमाल करो विच इज इजियर फॉर एवरीवन ठीक है So in this sheet, how will we do the third question? third question set A is equal to the set of all x such that x belongs to real numbers x square is equal to 16 and 2x is equal to 6 equals so we are given that there are two conditions x square is equal to 16 and 2x is equal to 6 so x will be a element of the set only when it satisfies this condition also and this condition also दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब वो एलिमेंट होगा सेट का इसका आंसर क्या हो गया x is equal to plus minus 4 so x should be plus minus 4 for this condition to be satisfied यहाँ पे x should be equal to 3 for this condition to be satisfied ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि x 4 भी हो और 3 भी हो minus 4 भी हो या 3 भी हो so there won't be any value of x so that these two conditions are satisfied together so it will be a null set no x is possible ठीक है Got it. yes आगे है क्या क्वेश्चन दिव्यानी No, sir. बस यहीं तक किए हैं कहां तक करें क्वेश्चंस अटेम्प्ट So I tried. I was doing it till question 20, and uske baad till 20 I had okay to do something else as well. okay all right try all the questions all three of you and then we can discuss in the next class ठीक है that's good we got some extra time for functions so we will be starting functions today and अच्छे से समझना है because functions is what we'll be using a lot it will be utilized everywhere this board is a bit chalo functions first we start with the definition of function उसके लिए उस definition बताने से पहले what I'm doing is I'm defining a relation f now I'm using the symbol f in place of r
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि relation I will always use the symbol R to make to represent a relation. I'm using the symbol F here. So symbol F, this is a relation from set A to B such that f of x is equal to y for all where x belongs to the set A and y belongs to the set B. ठीक है, अभी ये मैंने स्टेटमेंट लिखा, पहले मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट बता रहा हूँ. x is an element of set A. फर्स्ट सेट का एलिमेंट है x, सेकंड सेट का एलिमेंट है y. x को अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को अपन बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. Okay, f of x is an expression in x. This is some expression in x, and this complete f of x is equal to y. This is some mathematical relation. अब ये रिलेशन कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया से sin x is equal to y. This is a mathematical relation in the variables x and y, or some other relations such as x cube plus 1 is equal to y. कुछ भी बना सकते हैं. I'm taking log of x cube is equal to y and so on, etc. These are all mathematical relations. So f of x is equal to y is a mathematical relation. F of x is just an expression in x. जैसे ये वाला मैंने part लिया, only this sin x without the equality, then just sin x is known as an expression in x. ठीक है? x cube plus 1 is an expression in x. Log of x cube is an expression in x. x को अपन independent variable लेते हैं. X is known as the independent variable, and because after putting some value of x into the expression, we are getting some value of y in return. Y is known as the dependent variable. When we put the value of x in the expression, we get some value of y. That's why y is known as the dependent variable. ठीक है? If let's see, or let's understand using a visual representation. This is set A, this is set B. I'm defining a relation f from set A to set B such that x is an element of A is related to an element y of set B. ठीक है? Y is known as the image of x under f. X is known as the pre-image. X is known as the pre-image of y. Pre-image of y under f, under the relation f. ठीक है? y is equal to f of x है. अब expression in x को अपन y लिखें या f of x लिखें, it doesn't matter. y and f of x mean the same thing. They are the same thing. यहाँ पे f of x भी लिख सकता हूँ. This will be f of x equal to f of x. So जो expression in x है उसको अपन f of x के equal लेते हैं. That is equal to y. So y is equal to f of x. They are the same. ठीक है? First set is taken as the domain, and the second set is taken as the codomain. अभी आ रहा है यहाँ तक समझ में? अभी मैंने फंक्शन डिफाइन नहीं किया है. When is a relation a function? I haven't defined it yet. क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है? I have just written this statement till now. Now, for a relation to be a function, there are some conditions. A relation to be a function, the conditions are that all the elements
all the elements in the domain should have a unique image in the codomain, then we say that the relation is a function. क्या बोला मैंने? All the elements of the domain, all the elements, if all the elements of a domain have a unique image in the codomain, then that relation is a function. ठीक है, अच्छे से समझते हैं. All the elements in the domain, meaning यहाँ पे domain में there should be no free elements. There should be no free elements in the domain. कोई भी ऐसा element नहीं होना चाहिए जिसकी image नहीं बन रही हो. All the elements in the domain should have an image. That is the first condition. ठीक है. Second condition is that the image should be a unique one. Meaning यहाँ पे जो element है उसकी सिर्फ एक ही image होनी चाहिए in the codomain. Okay, one and only one image should be there for every element of the domain. Then that relation is a function. आ रहा है समझ में? ठीक है. यहाँ पे we are not concerned about if there are free elements in the codomain or not. There can be free elements in the codomain. We are not concerned about it. ठीक है. Definition में कहीं पे भी it is not said कि codomain में free elements नहीं हो सकते हैं. ठीक है. Codomain में free elements हैं या नहीं है, we are not concerned. It is not a problem for us. But domain में free elements नहीं होने चाहिए. And also it should have only one and only one image. Then that relation is a function. क्या ये आया समझ में? ठीक है. Now tell me this, that if I have two elements here, this is the set of domain, this is the domain. So यहाँ से both the elements have the same image in the codomain. Both the elements have the same image in the codomain. Is it a relation or a function? Is it a function or not? So it's not a function because they have the same image and each image should be unique. हाँ, और कोई? It is not unique. Function, I think, because अच्छा. अगर x square लेंगे तो -2 square की भी वैल्यू 4 ही होगी और 2 square की भी वैल्यू 4 ही होगी and x square is a function. तो एग्जांपल से थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे. अरे x मतलब स्क्वायर फंक्शन है तो हो सकता है दूसरा नहीं हो. सर आपने बोला था फ्री एलिमेंट्स डोमेन में नहीं होने चाहिए, तो डोमेन में यहाँ पे फ्री एलिमेंट्स इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है. What I saying is कि this will be a function. क्यों होगा ये फंक्शन? श्रुति को थोड़ा सा आइडिया है बट अभी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. we'll not explain with an example, क्योंकि एग्जाम्पल कोई अगर मैंने दूसरा ले लिया जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर गलत हो जाएगा. Why is this a function? Because definition के according what should happen, every element in the domain should have a unique image. Unique image मतलब एक ही image होनी चाहिए. हाँ श्रुति. Oh, so I thought that by unique image you meant different these things. नहीं, that is what I'm saying. कि unique image, by unique image we mean that there is only one image in the codomain. One image of its own, like it should one have image of its own. क्यों confuse कर रही है अपने आप? Sorry, I got one it. image, just one image. I am clear with it. Yeah, what is happening here? This element has one image, only one, which is a unique image. This element has one unique image. This element has one unique image. एक ही है, ठीक है. इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, दोनों सेम है, उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. So this will be a function because every element की एक ही इमेज आ रही है. And of course दूसरी कंडीशन भी satisfy हो रही है that all the elements in the domain have an image. So it is a function. If the situation is like this कि डोमेन में एक एलिमेंट है, उसकी दो इमेजेस हैं, will in this case will it be a function?
because there is no unique image. Yeah, because now the element does not have a unique image. It has more than one image. There are two images, so it will not be a function. This will not be a function and this will be a function. ठीक है? क्या ये आ रहा है समझ में? Yes, sir. Okay. Let's take some examples to make our concept clear. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, state whether the given relation is a function or not. Given relation is, in set form it is given, r is equal to 2,1, 3,1 and 4,2. अब इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं. एलिमेंट्स इन द डोमेन कौन से हो गए? 2, 3 and 4. एलिमेंट्स इन द कोडोमेन कौन से हो गए? Just 1 and 2. So I have a doubt. I'm sorry to interrupt. Yes. So Yeah. in sets, we consider codomain and range to be different, but in functions, we consider codomain and range to be the same, right? No, we do not consider that. So I what- haven't come to that part. Range is a subset only. Okay, sir. Yeah. Range is the set of all the images. ठीक है? उसमें जो free elements हो जाएंगे, those will not be considered in the set of range. कोडोमेन में जो free elements होंगे वो range में नहीं आएंगे. ठीक है? So यहाँ पे 2, 3 and 4 are the elements of domain. 1 and 2 are the elements of the codomain. 2 is related to 1. 3 is also related to 1. And 4 is related to 2. So is it a function? Yes, sir. Yes, it will be a function because क्या हो रहा है? Both our conditions are satisfied. Elements, there are no free elements in the domain, and also every element has a unique image, only one image. So therefore, it is a function. Another set, another relation: 2,2, 2,4, 3,3, and 4,4. Visually, 2, 3, 4 are the set, is the set of domain. 2, 4, 3. Again 2, 3, 4 is the codomain. 2 is related to 2. 2 is also related to 4. 3 is related to 3 and 4 is related to 4. Is this a function? No, sir. क्यों नहीं है? Sir, because it has two images, like there's no unique image. So Yeah. 2 has an image of 2 also as well as 4. Correct. 2 has two images, 2 and 4. Therefore, it is not a function. I'm sorry. Not a function. So I just want to clarify something. Yes, Divyani, yes. So when we were doing functions in class, our school teacher also said that for an output of x, there should be for an output of x, there should be only one y. So is it similar to this? For an output of x, no, you're either saying it incorrect or your ma'am said it incorrect. It should not be an output of x because output of x is same. Sorry, as y. input of x. Yeah, input of x has only one value of y. Yeah. Yeah. One So that is the same thing. If I'm putting Yeah. one So value of it's x, the same thing as this, right? yes, it is the same thing. Same ही thing तो हुआ. अगर मैं x की एक वैल्यू डाल रहा हूँ और y की भी एक ही वैल्यू आ रही है, that means it is a unique image. It is only one image that I'm getting.
आ रहा है समझ में? If I'm putting one value of x and I'm getting two values of y, then it is not a Yeah, so unique I just image. wanted to like clarify if it's the same thing. Yes, yes, that is the same. Relation 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, and 6, 7. This relation, is it a function? One, 2, 3, 4, 5, 6 are the elements of domain. 2, 3, 4, 5, 6, 7 are the elements of codomain. Yeah, it is. Yes, sir. I guess matlab? No, I didn't say I guess. I said Acha, yeah. what did you say? Yeah, it is. Yeah, it is. Yes. This is because every element has a unique image and no free elements. So yes, it is a function. Okay. One more example from your book. Which of the following sets of ordered pairs are functions? Explain your answers. 1, 3, 2, 3, 3, 1 and 4, 2. क्या ये है तुम्हारे पास book? Yeah. Do I have to write it down? We have the book, sir. But this is not a function. Okay. 1, 3, 2, 3, 3, 1 and 4, 2. So, Yes. which exercise is this? This is 15A. Is this a function? Oh, I'm sorry. 1 is related to 3, 2 is related to 3, Yes. 3 It to is. 1 and 4 to 2. Yes. It is a function, no free elements and a unique image. So yes, it is a function. Next one is 2, 1. So 2 is related to 1. 3, 1, 3 is also related to 1. Minus 1, 2, minus 1 to 2 and 2 to 0. Is it a function? Yes. Yes, it is a function क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. Yes, ठीक है. Yes, it is a function. Now, अब simple सा concept है. These two conditions should be satisfied for the relation to be a function. Okay, meaning what are the conditions? डोमेन में फ्री एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए एंड एक ही इमेज होनी चाहिए एवरी एलिमेंट की. ठीक है. सो इसी को एल्जेब्रिकली व्हाट वी मीन इज कि व्हेन वी इनपुट अ वैल्यू ऑफ x into f of x into the expression, if I input a value of x into the expression, it should give only one value of y. Only one value of y. That will be the algebraic test. For example, if I have say y square is equal to x, यहाँ पे क्या हो रहा है? y square is equal to x. Will it be a function? No, sir. Why? So because I'm getting two values of y in the same thing. Yes, because this will be equal to what? This is same as y is equal to plus minus root x. So if I input one value of x, I will get two values, one positive, one negative. So for one value of x, I'm getting two images. So it will not be a function. But if I change this, and I write x square is equal to y, I interchange x and y. Will it be a function? Yes, it is a function because for one value of x, I'm getting only one value of y. ठीक है. But यहाँ पे क्या हो रहा है? If I'm putting 4 also, x is equal to 4 also, y is equal to 16.
And if I'm also putting x is equal to -4, then y is also again 16. So we are getting the same image for two values of x. That doesn't affect us because two elements can have one image, can have the same image. Yes. So yes, this is a function, but this one is not a function. Divyani, is it clear? Yes, sir. Yeah. Okay. Now this is an algebraic test. What are we doing is we are inputting a value of x to get the value of y and seeing if it is unique or not. The same thing can be done graphically using vertical line test. Now vertical line test is again not such a difficult concept, just a big name. What it means is that if I make a vertical line and it is intersecting the graph at 2 points, 2 or more points, it means that for one value of x there are multiple images, multiple values of y. So that doesn't satisfy a condition for a function, so it won't be a function. Let's understand with an example. So vertical line test के लिए first I'm taking the equation y square is equal to x. ठीक है, अभी ग्राफ भी अपन रिकॉल करते जा रहे हैं जो अपन ने 10th में पढ़ा था, बिकॉज 10th के सारे कॉन्सेप्ट्स अगर याद हो जाते हैं तो इट विल बी मच इजियर फॉर अस इन 11th. ठीक है, दो एवरीथिंग इज कवर्ड अगेन इन योर बुक्स, so we will be doing it again, not a big deal, but because we have studied it, try recalling it at every point. Y square is equal to x. I'm not sure how much you've studied parabolas, but this is the equation of a parabola. Equation of a parabola is y square is equal to 4ax in general. याद आ रहा है क्या? Y square is equal to 4ax is the equation of a parabola. ठीक है, मैंने पढ़ाया श्रुति? हाँ, याद आना चाहिए. ठीक है, क्वाड्रेटिक जब पढ़ेंगे तो पैराबोला वापस करेंगे एंड देन वी विल सी अगेन, वी विल डिराइव दिस. सो y square is equal to 4x is the equation of a parabola which has the axis as x-axis. यहाँ पे क्या हो रहा है? In this equation 4a is equal to 1. तो ये वाला इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हो गया with x-axis as the axis and origin as the vertex. ठीक है, because a is positive it will be facing the positive x-axis. So this is the graph of the function of the relation. This is the graph of the relation. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Let's input some value. I input f of 4. इसका क्या मतलब हुआ? This is the value of the function. We are finding the value of the function at x is equal to 4. So what we do is we put or we replace x everywhere with this value in the expression. तो अगर ये है तो यहाँ पे this will be equal to 4. F of 4 is equal to 4. This is equal to y. ठीक है, तो y is equal to 4 implies y is equal to, sorry, y square, I'm sorry, this will be y square. Okay, a little bit of mistake here. यहाँ पे अपन लेंगे f of 4 is equal to plus minus root of 4. Plus minus root of 4. This will be equal to plus minus 2. f of 4 की जगह y लिख दिया मैंने. आ रहा है समझ में? Because f of x is equal to y. तो अगर मैं y square वहां पे पुट करता तो that would have been wrong. ठीक है, तो f of x is equal to y. y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2. x की वैल्यू मैंने इनपुट करी है यहाँ पे 4. तो क्या हो रहा है? x is equal to
4 पे y is coming out to be +2 and -2. So there will be two values of y. If x is equal to 4 here, एक ऊपर आ जाएगी वैल्यू which is 4, 2 and नीचे आ जाएगी एक लाइन के which is 4, -2. आ रहा है समझ में? ठीक है. Now if I make a vertical line at x is equal to 4, what is happening? It is intersecting the curve at 2 points. The curve of the parabola, it is intersecting it at 2 points. क्या मीनिंग है उसका? उसका मीनिंग यही है कि x की एक वैल्यू के लिए there are two images. There are two images. Because there are two images, therefore it will not be a function. This is vertical line test. ठीक है? So even if there is only one line, one vertical line जो कि intersect कर रही है curve को at 2 or more than 2 points, then it won't be a function. आ रहा है समझ में? ठीक है. Let's interchange it. यहाँ पे अभी जो अपन ने expression relation देखा है उसको interchange करते हैं x and y को, and we take x square is equal to y. X square is equal to y.